Assalamu alaikum students, welcome to English class. Today we will learn noun, proper, collective and common noun. This is the introduction to noun. Proper noun. It's the name of a specific person, place or thing. It always starts with a capital letter. For example, John, Paris, Eiffel Tower. Common noun. It's a general name for a person, place, or thing. It doesn't start with a capital letter unless it's at the beginning of a sentence. For example, dog, city, book. Collective noun. It's a word used for a group of things or people. For example, herd for a group of cows. Team for a group of players. Flock for a group of birds. प्रॉपर नाउन कोई स्पेसिफिक या ख़ास जगह या इंसान का नाम होता है जो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे कि जॉन, पेरिस या आईफिल टावर. कोई ख़ास जगहों का नाम या किसी ख़ास इंसान का नाम. कॉमन नाउन एक कोई भी जनरल नाम किसी जगह का, इंसान का या किसी चीज़ का, जैसे कि डॉग, सिटी या बुक. बहुत ही आम और कोई जनरल नाम. कलेक्टिव नाउन जो ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल हो या ज़्यादा काउस के लिए इस्तेमाल हो, ज़्यादा प्लेयर्स के लिए, एक प्लेयर की बात ना हो, ज़्यादा प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल हो, ज़्यादा बर्ड्स के लिए इस्तेमाल हो, ग्रुप या टीम जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो. These are the examples of proper noun, common noun and collective noun. Proper noun. Sarah went to New York City for her vacation. इसमें क्या है ख़ास चीज़? सारा. कॉमन नाउन. द कैट कैच्ड द बॉल थ्रू द गार्डन. कैट एक कॉमन नाउन है, बॉल भी एक कॉमन नाउन है. कलेक्टिव नाउन. अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई. फ्लोक ऑफ बर्ड्स मतलब फ्लोक जो ज़्यादा चीज़ है, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन. एंड हर्ड इज़ अ कलेक्टिव नाउन एज वेल, क्योंकि वो भी एक ग्रुप ऑफ काउस के लिए इस्तेमाल किया गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो. डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू टेल अस व्हाट डू यू वांट टू सी मोर इन द कॉमेंट सेक्शन. इफ यू वांट one-on-one class or any other information, here is our contact number.